And now it's time to discuss work energy equation. Work energy equation, or you can call it the interconversion of kinetic energy and potential energy. ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा काम है, जरा इसको जल्दी से देख लेते हैं. ठीक है जी. Let's say I have a mass, I have an object, let's say whose mass is m, and it is at a certain height from the ground level, and this is your ground. ठीक है जी. And the distance between the ground and the object is h. And the object is at rest at this point, and यहाँ पर ये object rest पर, यानी at this point its velocity is 0. And now when its velocity is 0 here, ultimately its kinetic energy will be 0 here, but its potential energy at this point will be equal to mgh, of course. ठीक है. Now when the ball is dropped from this point, होगा क्या कि ये नीचे आएगा, नीचे आते आते अपनी वेलोसिटी को गेन करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एंड इट विल रीच अ सर्टेन वेलोसिटी है. बट जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि इसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. लेकिन इस पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. तो अगर मैं इसको पॉइंट x का नाम दूं और इसको पॉइंट y का नाम दूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट x टोटल एनर्जी इज इक्वल टू kinetic energy plus potential energy. Now since the kinetic energy is 0, so and the potential energy is mgh, so my total energy at that point is mgh. Alright. Now if I start doing something like this, कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट की मोशन को फ्रॉम पॉइंट x to y डिस्कस करने की कोशिश करूं मैं, तो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ माय ऑब्जेक्ट वाज 0. फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या थी, दिस आई डोंट नो, मैं इसको v का नाम दे देता हूं. ठीक है. अच्छा, displacement covered during the motion from x to y is of course h, and the acceleration meanwhile was plus g, that was 9.8 meters per second square. Now by using equation of motion I can write 2s equal vf square minus vi square. ठीक है जी, equation of motion मुझे ये सिखाता है, तो 2a की जगह मैं पुट करूंगा h, a की जगह मैं पुट करूंगा g, h की s की जगह मैं पुट करूंगा h, vf की जगह v square and vi की जगह 0 square. So my v square will be equal to 2gh. ठीक है जी. अच्छा, अगर so this is the square of the velocity at this point y. At this point अगर मैं इसकी kinetic energy कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी kinetic energy at y, तो that will be equal to half m v square, and my v square is actually equal to 2 times gh. So these two will be cancelled with each other. Again my kinetic energy at that point is found out to be mgh. Now at that point मेरी जो potential energy है वो क्या है, वो 0 है, as h is equal to 0. So my total energy at y is equal to again kinetic energy plus potential energy. But here my kinetic energy is mgh, my potential energy is 0, so again that is equal to mgh. So the total energy at point x is mgh, and the total energy at point y is mgh. It means that the energy is conserved. जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इसे हमने मैथमेटिकली भी देख लिया. अच्छा, मैक्सिमम अगर लेट्स से इफ देयर इज फ्रिक्शन
in your system, then ultimately this friction will be doing some work. तो ultimately अब होगा क्या कि आपकी जो potential energy थी वो actually जिसका आप कह सकते हैं loss of potential energy, ये दो हिस्सों में जाएगी, एक gain of kinetic energy और साथ में work done due to the friction. So if F is the frictional force and H is the displacement, then I will write this to be FH. ठीक है जी, that is the work done due to the friction. This is the work done due to friction. Alright, so मैं इसको और बेहतर तरीके से यूँ लिख सकता हूँ कि my loss of potential energy minus the gain of kinetic energy is actually equal to the work done by frictional force. And this is what actually, again मैं यही कहूँगा, we were required with.